So ISTQB is a non-profit organization work across the globe to streamline the testing processes. The process defined by the ISTQB becomes de facto standard. Okay, and the syllabus that we are referring is the latest one, 4.0. About testometer, we are here in this industry from 2015, and we are basically focusing on the corporate clients, okay, to deliver the training services, certification services at organization level. Few of our clients with whom we continuously working like UI, QK, Dassault. Okay, and we provide the certification as well as courses in the testing. So we are specialized in the testing industry. About ISTQB, as I said, established in 1998, and their mission is to like promote software testing as a separate profession. Okay, and that's the reason they define and refine the processes. This is certification portfolio what ISTQB offering you. Certified tester foundation level. You are at the bottom level of this portfolio now. As per your experience level, as per your role, you can add a certification in your career, uh, in your resume and CV. Okay, and every certification has its own benefit and value that every client. So many of the clients and customers expecting testers should be certified at certain level, and these are the level of certification you can do. Like as per your role, for example, you are managing your team, go for the test management. If you are managing team and technical side, test analyst will be a choice. Non-functional tester can go for technical test analyst, and if you are working in a releases or agile, you can go for agile testing. There are many specialist certification nowadays trending. One of the favorite for all the organization is now ISTQB AI testing, how AI application can be tested. So you will get insight about AI application and the testing across AI application because it's a booming. I will recommend you after this foundation, come back for AI. For a live session, you attend the live session because every month we are not having the live batches. Oh, sorry, every week we are not having the live batches. Okay, there is no difference between recording and live batch actually. The same recording you will get. About me, my name is Yogesh Shinde. My highest qualification is M.Tech in Computer Science and Technology, and I conduct the various certification training, whatever ISTQB Scrum be offering. Few of the clients with whom I'm closely working, and this is the course structure. Okay. So chapter one is all about the fundamental testing process. So software testing life cycle, testing principle will be the objectivity here. Chapter two is all about testing throughout the development life cycle, like across the agile, across the waterfall, how we can test through the levels of testing. So here we closely relate the levels of testing like unit integration, system, UAT, like this. Then we are having upper levels of testing. We are having the static testing without execution of the code, how we can test. So that is a learning objectivity, like static testing technique, like reviews and all. Then test analysis and design. So how we analyze the test basis like requirement, user stories, acceptance criteria. And based on that test basis documents, how we can design the test cases by applying the testing techniques like black box testing, white box testing, experience-based testing. So how we can utilize this technique effectively in order to write the test cases and design the test case. Because I have seen many of the testers, they're writing the test cases, but they are not using the test design technique fully and they missed out some scenario conditions. Then managing the test activity. Here we are talking about the test planning only, how manager test plan the testing activity and execute it. Finally, testing tools in a generic way. What are the areas where automation can be used or cannot be used like this? And finally, we are having the internal mock test and final exam. So this is about the exam structure. Like six topic, total questions are 40. Total points in exam is a 40 only. Passing criteria is out of 40 question, 26 must be correctly answered, or you can consider 65% is a passing. You have to remember the concept like retesting, regression. K2 understand the concept and K3 apply the concept on a project. So K1 टाइप क्वेश्चन जो है वो सिंपल डिक्शनरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशन काइंड क्वेश्चन होते हैं. K2 टाइप क्वेश्चन जो है वो like they will check the how you understand the concept of regression, retesting, smoke, sanity like this.
K3 जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड रहता है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिलेटेड अप्लाई करने के लिए। बट आप जो भी ये जो स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूँ ये खुद के नॉलेज के लिए होनेस्टली करो। ओके, आपको पास होना है और एग्जाम देना है उसका, दैट इज नॉट योर गोल। आई डोंट वांट माय टेस्टर शुड बी अ हैविंग ओनली द पीस ऑफ पेपर। Okay, like certificate is a piece of paper, but what is a goal that ISTQB has? What is the vision ISTQB has? They want to produce or they want to create a tester who having the knowledge and skill, who can compete or who can fight with the developers, management. Correct, na? In a proper way. Yes, Yes. yes, definitely we have to. और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज होगा। करेक्ट ना? I know you are doing good testing, but still, if you watch my video, it may enhance your skill set in some way in a practical day-to-day activities. Okay, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं पे कोरिलेट होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, इस जो भी आप टेस्टिंग करते हो, ओके, एक पहला बेसिक रूल है कि कभी भी लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए टेस्टिंग किसी भी स्क्रीन का। ओके, आपको पता है रिस्क बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे, उसके बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। बट व्हेन यू आर रीडिंग द स्क्रीन, ऑलवेज रीड एंड टेस्ट द स्क्रीन इन द जेड शेप। ओके, तो आपको क्या करना है कि एक एक चीज को एकदम पेशेंटली जाके चेक करना है जब आप फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करते हो डिटेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने जेड शेप में इस स्क्रीन को रीड करने के लिए कहा और उसके हिसाब से टेस्ट करना जब आप कोई भी स्क्रीन पहले बार देखते हो। ओके, उसके टेस्ट केस क्या लिखे हैं, कौन से सीक्वेंस में लिखे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बराबर। बट जो आप स्मोक या सैनिटी लेवल या जो आप टेस्टिंग करते हो इन डेप्थ, तो कैसे कर सकते हो? तो जेड शेप में क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें विजुअल जो हमारा आईज का विजुअल है स्क्रीन के ऊपर, वो एक एक चीज आपकी कैप्चर होगी। जैसे एग्जांपल के लिए ऐड टाइम शीट यहाँ पे है, सो इट्स अ लेबल, आई विल गो एंड चेक द स्पेलिंग एंड ऑल, स्पेसिंग, ओके, जो भी उसका है। फिर उसके बाद टाइम शीट लिस्ट है, इट्स अ लिंक, ओके, आई हैव टू चेक इट वेदर इट इज नेविगेटिंग द बैक और नॉट। करेक्ट। जो भी हमारे यूआई के लाइक फंडामेंटल 6 रूल्स है कि एवरी स्क्रीन शुड हैव द क्लोज एक्शन, सबमिट एक्शन, नेविगेशन टू द पैरेंट विंडो, बराबर होना चाहिए ना? सम रूल स्टैंडर्ड क्वालिटी। सो लेफ्ट, Yes. यस, लेफ्ट टू राइट जाके देखो, यहाँ पे क्लोज आया, इमीडिएटली क्लोज करके देखो कि हो रहा है क्या। यस, टेस्ट केसेस बाद में देख लेना, दैट विल बी ओके, क्योंकि टेस्ट केस नॉर्मली मेरे हिसाब से तो सिर्फ बिजनेस फंक्शनैलिटी के होने चाहिए। करेक्ट ना? Agree? Yes. There Yes. should be exploratory testing, okay, that you have to blend or that you have to complement with your written test cases. Agree? देन यहाँ से आप डायगोनली नीचे आ जाओ। डायगोनली मैंने कहा, और जितने फील्ड वहां पे मिल रहे हैं चेक इट प्रॉपरली। जैसे स्टार्ट डेट है, मैंडेटरी है, उसका कंडीशन, मतलब आपको रिक्वायरमेंट भी तो पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू कीप टेस्टिंग। डायगोनली जब आप नीचे आओगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल। करेक्ट? एग्री? क्योंकि जितने कॉल टू एक्शन बटन है, एक तो ऊपर मिलेंगे या फिर नीचे मिलेंगे। करेक्ट है ना? एग्री गाइस? जी। Yes. Yes. तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन आपके कवर होंगे। जब आप डायगोनली नीचे आते हो तो सिर्फ डायगोनल के ऊपर जितने फील्ड आपको मिलते हैं उतने आप कवर करो, उनके लेबल, फील्ड, डेटा टाइप जो भी है। फिर आप जेड शेप को कंप्लीट करो, लाइक बॉटम लेफ्ट टू राइट। ठीक है? और जितने सीटीए एक्शन है, जैसे यहाँ पे अभी कैंसल है, सेव न्यू टाइम शीट है, वो देखो चल रहा है क्या प्रॉपरली। और ये जब कंप्लीट होगा तो आपके दो ट्रायंगल बचेंगे, ऊपर एंड लोअर ट्रायंगल। फिर अभी अपर ट्रायंगल जो बचा बना है उसके अंदर जितने फील्ड है वो जाके देखो पेशेंटली। जैसे मे बी ट्रेनर नेम है, बैच है, बराबर ना? बैच यूआरएल है, एंड डेट है, छोटी छोटी चीजें देखो जो भी आपका क्राइटेरिया है टेस्टिंग का, उसके हिसाब से, वैलिडेशन के हिसाब से। फिर जो लोअर ट्रायंगल बनेगा उसमें से जाके फील्ड देखो। ओके, और इस वे से आप इस स्क्रीन का टेस्टिंग कंप्लीट करो। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपका कोई भी चीज मिस आउट नहीं होगा। बराबर है ना? जब आप फर्स्ट टाइम कोई किसी न्यू स्क्रीन के ऊपर जाते हो, एंड दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू बी फॉलोड। यू गॉट माई पॉइंट? ओके। सो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपके फर्स्ट इंस्टेंस में या स्मोक लेवल पे या सैनिटरी लेवल पे ही क्लियर हो जाएंगी। बराबर है ना? जो भी क्रिटिकल बग्स है रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी, ये एडिट नहीं हो रहा, वो सेव नहीं हो रहा, वो नहीं है,
और इसके बाद जाके आप फिर जो भी बिजनेस रूल्स है वो आप देख सकते हो ना इसके बाद जाके, क्योंकि बिजनेस रूल में भी तो यही कवर होने वाला है। क्लियर है ना? यस। सो कभी भी टेस्टिंग करना है तो डू इट इन जेड शेप। अभी जेड शेप में ही क्यों करना है, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैं पहले मिस्टेक करता था वो अभी नहीं हो रही। एक पेशेंट लेवल आपका बढ़ जाता है स्क्रीन रीड करने का, देखने का, क्योंकि एक ही स्क्रीन हम हजारों टाइम देखते हैं, तो एक लाइक हमारे दिमाग में वो ने क्या कॉपी पेस्ट हुई रहती है स्क्रीन, बराबर ना? मतलब बिना ये करे हम क्लिक करते रहते हैं बटन के ऊपर, हमें पता है कि कौन सा बटन की पोजीशन कहाँ पे है। एग्री ना? यस गाइस, चलो यस। समथिंग। और जब भी आप टेस्टिंग करते हो, डू नॉट टेस्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड, मतलब जो भी टेस्टिंग आपको करना है कभी भी फर्स्ट रिकॉर्ड पे मत करना। फर्स्ट रिकॉर्ड नॉर्मली सेव करो, गो टू द सेकंड रिकॉर्ड, यस, एंड अकॉर्डिंगली टेस्ट इट। क्लियर? कैन यू हियर मी गाइस? यस, नो? यस। 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 So इस पॉइंट ऑफ व्यू में एंड मेनी मोर थिंग कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, हाउ वी शुड फॉलो दिस, ओके। और टेस्टर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, बट स्टिल लाइक 3-3 4-4 साल एक्सपीरियंस के बावजूद we people are failing to assign the priorities and severity. We don't know the criteria to assign it. We don't know the how estimation is doing. बराबर है ना? यस, होता है ना ऐसा? कितने लोगों को कॉन्फिडेंट है आई कैन गिव द एस्टिमेशन प्रॉपरली टू माय मैनेजर और लीड रिलेटेड टू टेस्टिंग? है क्या? यस? नो एट द मोमेंट। नो एट द मोमेंट, यस। सो Yeah. सो कभी ऐसा मत समझो कि मुझे सब कुछ आता है एंड आई हैव दिस पोजीशन, आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई हैव दिस सैलरी, so you are a student for me, okay, I will treat you equally. Yes, if you feel you want to learn something, okay, and that will be benefit to your day to day work and activity, please go through this material what I am providing you, and these are the very good material. ठीक है? आपको यूट्यूब इधर उधर सब कुछ मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगा, बट जिस वे से यहाँ पे मिलेगा वो आपको रिप्लिकेट नहीं होगा कहीं पे, दैट आई विल 100% कॉन्फिडेंट, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है सब मैंने वहां पे यूज किया है, एंड आई हैव शेयर्ड मेनी बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवर देयर दैट यू कैन गो थ्रू इट. My objectivity is not to teach you particular definition or formula, okay. My objectivity here as a mentor is to shift your mindset, okay, from a particular level to at testing level. My objectivity is to build the attitude to be a test engineer, and that's it. एक बार आपको टेस्टिंग का एटीट्यूड आ गया ना और कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप कोई भी चीजें आराम से सीख सकते हो, बिकॉज सीखने के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, बट द एटीट्यूड जो चाहिए ना वो आपको कभी कहीं से नहीं मिलेगा until and unless you follow the things what you learn. बराबर है ना? एग्री गाइस? नहीं तो आ गया डेवलपर और बोला कि अरे इसको प्रायोरिटी क्यों हाई दिया है, लो कर दो, इसको सिविरिटी क्यों हाई दिया है, लो कर दो, एंड वी आर डूइंग इट विदाउट आस्किंग एनी क्रॉस क्वेश्चन. चलेगा क्या ऐसा काम, ऐसा टेस्टर हमें? यस? नो। नो? Always remember, you are not hired to compare the requirement in the application. You have to go Yeah. beyond it. You have to go beyond it and destroy the product in a testing environment in any possible way. Correct? Yes. How it can be possible? Yes, it's possible. Okay, if you follow the best practices of the testing, and yes, you will do the good job. Clear? Thank you, guys. कुछ रहेगा तो एडमिन के साथ बात कर लेंगे.